अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम्स इन सेल्विया प्लाथ पोइट्री। तो सेल्विया प्लाथ का भी जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी पोइम्स थी, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था। मेरे पास जस्ट 2 डेज़ थे, फाइनल मेरा आ चुका था फाइनल पेपर, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है नोट्स बनाए। तो मैंने सिर्फ थीम्स इन सेल्विया प्लाथ पोइट्री ये वाला क्वेश्चन एक बनाया था, इसको रेडी किया था, यही लिख के आई थी और मेरे काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आए थे। ठीक है, Sylvia Plath was an American poet, novelist, and short story writer. She was born in 1932. By the way, she is my favorite writer. And she died in 1963. 30 years old की थी जो जब इनकी जो है इन्होंने सुसाइड कर ली थी। ठीक है, she suffered from depression and attempted suicide. The silence depressed me. इनका कोट है। ठीक है, it was not the silence of silence, it was my own silence. Sylvia Plath experienced several traumas throughout her life. मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं इसके, बहुत ईजी हैं, आप लोगों ने यही करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको पोइम्स इनकी आती हैं तो करें, अगर नहीं आती तो उनके लिए अल्टरनेटिव बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रेडी कर लें। थ्रू आउट हर लाइफ विच इम्पैक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन ड्यू टू द फादर डेथ एंड breakdown of her marriage with poet Ted Hughes. Sylvia Plath died by suicide. She killed herself by putting her head in the oven. Oh my God! At the age of 30. ठीक है, इन्होंने ओवन में अपना सर रख दिया था, जिसकी वजह से जो है बोम ब्लास्ट हुआ और उनकी जो है डेथ होगी। After that, Ted Hughes' wife and daughter also killed by themselves, and Plath सन आल्सो हैंग। ठीक है, सेल्विया प्लाथ के जो बेटे थे उन्होंने खुद अपने आप को भी फांसी दे ली थी एक घर में। शी हैज़ रिटन कन्फेशनल पोइट्री होती है जो अपने से रिलेटेड लिखी जाए। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज पर्सनल और आई लाइक कन्फेशनल पोइट्री ये होती है कि अपने आप को डिस्कस करना, पर्सनल जो है अपनी ज़िंदगी को डिस्कस करना। दैट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। शी डाइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। Most of the time, Sylvia Plath writes poetry on theme of death and destruction. Themes in Sylvia Plath poetry: death, destruction, loneliness, insecurity, and this type of things we will discuss next. Okay, let's go ahead. Death and destruction. Death is one of the major theme in his poetry of Sylvia Plath. She felt it closely when she attempted suicide. She knows that death is an accepted universal truth, so that's why she described it. She has the ability to express it in the words about her experience with that. Critics said Sylvia saw death as a real path by which she can solve her conflict and fulfill her wish and desires. Mental violence never satisfied ambition, so dying is an art to get rid from all of that. अच्छा, वो समझती थी कि अगर मैं मर गई तो मेरी सारी चीज़ों से पीछा छूट जाएगा, इस वजह से उसने जो अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। That's why she find that only option to get rid from all of the troubles of life. Daddy is the first poem that comes into mind when we thinking about the theme of death and destruction in Sylvia Plath poetry. In this poem, she talks about the death of her father. She writes, "Daddy, I have had to kill you. You died before I had time." She hates the loss that she suffered at the young age. जब वो 8 साल की थी जब उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी, इसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। टेड ह्यूक्स का उसके साथ रवैया अच्छा नहीं था उसके हस्बैंड का, इस वजह से भी वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। हर पोइट्री इज़ ऑटोबायोग्राफिकल। इन दिस पोएम शी राइट्स अबाउट हर लॉस विच वाज कॉज्ड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर फादर. In the poem Lady Lazarus, Sylvia Plath writes about her own experience with suicidal attempts, describing the whole process step by step. Also, Ted Hughes also had affair with other women. That's issue also disturbed the mind of Sylvia, and at last committed suicide. She put her head into the oven and then died. Mental violence, another theme. Sylvia Plath struggled with mental illness and depression, and those are the recurring themes in her poetry. In her work, she explored the issues of identity, self-worth, and the difficulties of living with mental health. She shows the impact of psychological trauma in her poetry. He shows her own struggle with depression, anxiety, by ultimately her tragic suicide. Sylvia Plath poetry is a direct and unified poetry. It is a representation of her inner pain, giving readers a full understanding of her mental health. In The Bell Jar, she clearly shows the sensation of depression, comparing herself to being stuck within a bell jar, cut off from the suicidal world and covered by the weight of one's mind. She represents the mirror of witness for her own background, showing the broken and damaged image of herself that creates and increases her mental illness. Loneliness and insecurity. Loneliness and insecurity are the major theme in Sylvia Plath poetry. She shows the sense of isolation, disconnection, and she experienced throughout her life. She writes, "I could never talk to you. The tongue is stuck in my jaw." Shows a sense of loneliness and disconnection that she felt in her relationship with others. Similarly,
इन द बेल जार सेल्विया प्लाथ प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल विद इनसिक्योरिटी एंड लोनलीनेस शोइंग, बेल जार इनकी पोएम थी, ठीक है, शोइंग दैट हाउ सोशल प्रेशर कैन अफेक्ट ऑन अ वुमन साइकी। ये सारा आप लोग यहाँ से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। द बी मीटिंग पोएम शोज द इनसिक्योरिटी ऑफ द पोइट। शी राइट्स, आई एम न्यूड एज चिकन नेक, डज एनीबडी लव मी। काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो चुकी थी, दुनिया से अलग हो चुकी थी, एलिनेटेड हो चुकी थी, लोनलीनेस फील करती थी। डिस्पाइट द कंपनी ऑफ सो मैनी पीपल शी अलोन एंड डजंट फील प्रोटेक्टेड, हर होल लाइफ रिमेन्ड अनप्रोटेक्टेड, हर मदर वाज विद हर टू केयर ऑफ हर बट शी डिडंट फील सिक्योर इनफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका थीम है, यहाँ से आप लोग देखते जाएं, पढ़ते जाएं। सो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं थीम भी पढ़ के दिखती हूँ आपको, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। प्रॉब्लम वुमेन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन सिल्विया प्लाथ पोएट्री। शी राइट्स अबाउट द मिजरीज ऑफ फीमेल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट somehow she raised her voice against the woman's weakness, helplessness, suffering, and the miserable condition of the widow who has been presented in the poem Widow. Sylvia Plath was famous for discussing these type of themes in her poetry. A life without a loving husband is empty, and a widow must suffer her entire life because her husband left her. Widow मतलब the बेवा, ठीक है। She has to accept norms of society and miserable life become her future. After the death of her husband, the widow is all alone in a whole world. She is against norms of the society in which women are considered inferior to men. She wants to put that in front of her readers. She used similarly metaphor, imagery, personification, her work based on personal experience and strength. सो अगर आप लोग ये क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं, काफ़ी लॉन्ग मैंने इसको रेडी किया हुआ है, तो आपके जो है अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके इसकी पोएम्स की जो तैयारी नहीं है आपकी, ठीक है, मेरे तो फाइनल पास थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेडी किया था। इसलिए किया था कि अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सेल्विया से रिलेटेड, तो मैं ये लिख दूँगी, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के आना पड़े। छोड़ के मैं कभी भी नहीं आई, लिख के मैं लाजमी आती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।